बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Chemistry with Mudassar Tanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel. आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं या जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की जो वीडियो है इसमें आपके साथ केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एसएस फीमेल का जो टेस्ट हुआ है 25/5/2023 को, उसकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा जो कि ओरिजिनल पेपर में आई थी। दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है फीमेल एसएस टेस्ट केमिस्ट्री 25/5/2023। क्वेश्चन नंबर 1, आयनाइजेशन पोटेंशियल विद इन पीरियाडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी, increase along the period with fluctuations. Question number 1, right answer is D. Question number 2, following is a chalcogen. Question number 2, following is a chalcogen. The right option is option B, TE. Question number 2, right answer is B. Next, question number 3, following is not a halogen. The right answer for question number 3 is option D, AS. Question number 3, right answer is D. Question number 4, following has the lowest value of electron affinity. The right answer for question number 4 is option D, helium. हीलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो लो होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, DsP2 is shown by the following structure. The right answer for question number 5 is option C, trigonal bipyramidal. Question number 5, right answer is C. Question number 6, sp2 is shown by the following structure. Question number 6, sp3 is shown by the following structure. The right answer is option D, tetrahedral. sp3 is shown by the following structure, so right option is D, tetrahedral. Question number 7, D2sp3 is shown by the following structure. The right answer is option B, octahedral. Question number 7, right answer is B, octahedral. Question number 8, an octahedral complex has a coordination number of. The right answer for question number 8 is option C, 6. Question number 8, right answer is C. Question number 9, a tetrahedral structure has a coordination number of. The right answer for question number 9 is option B, 4. Question number 10, structure of NaCl is. The right answer for question number 10 is option A, FCC. Question number 11, KBr has a. Right answer for question number 11 is option A, rock salt structure. Question number 12, following is the lowest symmetry structure. The right answer is option C, triclinic. Following is the lowest symmetry structure. Question number 12, the right answer is triclinic. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9
और इस तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट Question number 13, right answer is option A, beta keto ester. Question number 13, right answer is option A. Question number 14, which of the following detector is not commonly paired with GC? Right answer for question number 14 is interferometer. Question number 14, right answer is D. Question number 15, which of the following does not describe structure types of polyhedral polyboron hydride compounds? The right answer for question number 15 is option A, quadro. Question number 15, right answer is A. Question number 16, all of the following are powerful electrophile except the right answer for question number 16 is option C, pH3. Question number 17, an SN2 reaction on a chiral center with configuration R must result in product with a configuration that is. The right answer for question number 17 is option A, exclusively S. Question number 18, what is the bond order of helium? The right answer for question number 18 is option C, 1/2. Question number 19, the Born-Oppenheimer approximation neglects. The right option for question number 19 is option C, nuclear motion. Question number 20, the Stern-Gorlach experiment demonstrated the existence of. The right option is option C, spin. Question number 21, a harmonic oscillator is used as a model for. The right answer for question number 21 is option D, molecular vibration. Question number 22, the intermolecular forces in benzene at room temperature can be described as. The right option for question number 22 is option B, only electrostatic. Question number 22, right answer is B, only electrostatic. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Question number 23, which of the following functional group is least likely to be found in the interior of a mammalian cell? The right answer for question number 23 is acid chloride. Question number 23, right answer is B, acid chloride. Question number 24, रिएक्शन दिया हुआ है दोस्तों BrCH2CH3 plus MgMg BrCH2CH3 of the following, which would be the best choice of solvent in which to conduct the reaction shown above? The right answer is diethyl ether. Question number 24, right answer is D, diethyl ether. Question number 25, which of the following instrument is not governed by Beer-Lambert law? The right answer is option B, infrared spectroscopy. Question number 26, 1 liter is equal to. The right answer for question number 26 is 1000 cubic centimeter. 1 liter is equal to 1000 cubic centimeter. Question number 27, following is an expression of concentration. The right answer for question number 27 is option D, all of these. Question number 28, molecular weight of NaOH is.
The right answer for question number 28 is option A, 40 gram. Question number 29. 1000 ppm of NaOH solution would contain NaOH is. The right answer for question number 29 is option B, 1 gram per liter. Question number 30. Gravimetric titration is a type of titration where the following parameter is used to determine the concentration of the inhalant. The right answer for question number 30 is option D, mass. Question number 31. In argentometric titration must involve the following ions. The right answer is Ag, ions. Question number 31, right answer is A. Question number 32, crystal structure can be determined by. The right answer for question number 32 is X-rays diffraction technique. Question number 32, right answer is B. Question number 33, vibrational spectroscopy is another name for. The right answer for question number 33 is infrared spectroscopy. Question number 34, electronic excitation spectroscopy is another name for. The right option is UV visible spectroscopy. इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो दूसरा नाम है। दोस्तों ये जो है फीमेल एसएस का ओरिजिनल टेस्ट है जो कि केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 25/5/2023 को कंडक्ट किया गया है। इसके राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मज़ीद जो क्वेश्चन रहते हैं उनके भी राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर किसी दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 35, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर सरफेस टेंशन। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35 इज स्टेलेगोमीटर. Stalegometer is the right answer for question number 35. D option is correct. Question number 36. Bragg's law is. The right answer is option A, n lambda is equal to 2ds 2d sine theta. Question number 36. Right answer is option A. Question number 37. The SI unit of surface tension is. The right answer is option B, Newton meter. Newton per meter is the unit of surface tension. Question number 38, pH plus pOH is equal to. तो दोस्तों pH plus pOH जो है वो 14 के इक्वल होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38. Question number 39, hydrogen gas can be used in the following device to produce clean energy. The right answer for question number 39 is option C, fuel cell. Question number 39, right answer is C. Question number 40, the total pressure of a mixture of a gases is equal to the sum of partial pressure of all the gases present in the statement of. ये कौन सी लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट है? तो दोस्तों राइट ऑप्शन है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. Question number 40, right option is B, Dalton law of partial pressure. Question number 41, the kinetic gas equation is given by the equation. The right answer for question number 41 is option A, PV is equal to 1/3 N. Question number 41, right answer is A. Question number 42, free path is the distance traveled by molecule in. The right answer is B, 4 Coulomb. Question number 42, right answer is B. Question number 43, the Coulomb frequency of a gas is. The right answer for question number 43 is option B, directly proportional to the absolute temperature. Next question number 44, for 1 moles of a gas the kinetic energy is given by the equation. The right answer for question number 44 is E is equal to 3 under root 2 RT. Question number 44, right answer is B.
Question number 45. Common name of ascorbic acid is विटामिन सी। ascorbic acid जो है वो ascorbic acid का कॉमन नेम ऑफ ascorbic acid जो है वो विटामिन सी है। तो दोस्तों इस टेस्ट के अंदर टोटल 45 MCQs थी और ये टेस्ट जो है फीमेल एसएस केमिस्ट्री का ओरिजिनल टेस्ट है जो कि केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 25/5/2023 को कंडक्ट किया गया था। जिन फीमेल्स ने भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है वो अपने राइट ऑप्शन जो है वो चेक कर सकती हैं इस वीडियो से। और जो भी दोस्त इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेल एसएस केमिस्ट्री का जो टेस्ट होगा उसमें भी इसी से रिलेटेड इसी तरह की एमसीक्यू जो है वो आने के चांसेस हैं। तो जो दोस्त भी एसएस केमिस्ट्री मेल टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को लाजमी वॉच करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये एसएस फीमेल का जो है वो ओरिजिनल टेस्ट है केपी पब्लिक सर्विस कमीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।